Hi, good morning everyone. How are you all? Dear students, already I have done two videos as well as today also your third video is going. So I welcome to you all. Paragraph Wildlife Sanctuaries and National Parks. Let's go. Wildlife sanctuaries, national park are set up by the government to protect wild animals. This reserve helped in saving endangered animals from extinction. Trees are not allowed to be cut down in this area as well. सरकार जंगली जानवर और पौधों की रक्षा के लिए बनाई जाती है। ये आरक्षित लुप्तप्राय जानवरों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मदद करता है। इन क्षेत्रों में पौधों को बिल्कुल काटने की अनुमति नहीं है। So, trees are not allowed to cut down in this area as well. Students, there are 100 national parks and 500 wildlife sanctuaries in India. A wildlife sanctuary is a reserved area to preserve endangered species. More than 500 wildlife and 100 national parks situated in our country. Today I giving to some examples of national wildlife sanctuaries. Example is there. Sundarban Tiger Reserve situated in the state of West Bengal, and Kanga National Park situated in the state of Madhya Pradesh, Kasiranga National Park location of Assam, Chilika Lake Bird Sanctuary situated in the state of Orissa, Gir National Park state of Gujarat, Corbett National Park Uttarakhand. You know students, Corbett National Park it is the oldest national park in our country. This is one of the oldest national park of our country, Corbett National Park, situated in the state of Uttarakhand. Other example is Bandipur National Park, Karnataka, and Periyar Wildlife Sanctuary, situated in the state of Land of Spices of state of Kerala. Okay, next we are going to do's and don'ts. See, dispose of plastic bags and waste properly only in dustbin, as this item may be harmful for the animals. You don't throw plastic or bags waste properly only in dustbin. Don't throw in other area, put it in केवल डस्टबिन में आपको थैली और कचरा फेंकना होगा। और चीज़ों जानवरों के लिए हानिकारक हो सकती है। This item may be harmful for the animals if they eat them. So, we should not throw plastic item because the plastic item are eat to animals. Next, do not disturb animals and birds by throwing stones at them or making loud noises. जानवरों और पक्षियों को उन पर पत्थर ना फेंके और जोर से शोर करके उनको परेशान ना करें. Do not light a fire inside a sanctuary or a park. They can use forest free. पार्क को अंदर आग न जलाए, इससे जंगल में आग लग सकती है. Last one is do not feed animals and birds in a park. The respect authorities take
care of their diet. You should not feed animals and birds. जानवर को बर्ड्स को अपन खाना नहीं खिलाए क्योंकि संबंधित अधिकारी उनके आहार पर ध्यान रखता है. Next, we are going to study monuments. What is monuments? Monuments are, temples, mosques, palaces, fort, and other structures that were built or for some special purposes is called monuments. Temples, mosque, palaces, fort, examples, etc. are there were built or for some special purpose are called monuments. Smaraka or smarago. It's the historical monuments, one of the source of history. Historical monuments is a building of a structure that was constructed long ago and of a great historical importance. ऐतिहासिक स्मारक राष्ट्रीय खजाने हैं और देश की समग्र सांस्कृतिक विरासत को प्रसिद्ध करता है. Some examples is your textbook here. One of the historical place, Taj Mahal and Red Fort and temples and other, Mahabalipuram and the Konark Sun Temple are few examples of historical monuments situated in our country. Unfortunately, many people spoil these monuments by scribbling or sketching names on them, spitting on the walls, and damaging the property in general. We must help and support the government in preserving these places of historical importance. Unfortunately, दुर्भाग्य से कई लोगों इन स्मारकों को खराब करने या उन पर नामों को लिखता है. दीवारों पर थूकने और सामान्य रूप से संबंधी को नुकसान भी करता है, नुकसान पहुंचाकर खराबी करता है. So we must help and support the government in preserving the places of historical importance. ये हमारा monuments स्मारकों ये महत्व के स्थानों को सुरक्षित और संरक्षित करने में सरकार को साथ साथ मदद और समर्थन करना जरूरी होगा. Next, do's and don'ts. Same as throw your waste only dustbin. You should not waste in some other areas. Put it only dustbin your waste. Do not deface walls, monuments by scribbling on them. स्मारकों दीवारों को नोच कर खराब न करें. Do not damage monuments, removing, breaking things aside them the just keepsake. अपने पितर को चीज़ों को खड़ा कर या तोड़कर एक स्मारक के रूप में स्मारकों को नुकसान न पहुंचाए. Next, museum. Next, we are going to study the museum. Museum, museum collect and preserve or objects and materials of religious and cultural and historical value. They are a good source of entertainment. A building in which artifacts of item historical, artistic and cultural importance are kept, preserved, showcased people is called museum. ये ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व की कलाकृति या वस्तु रखी जाती है. ये चीज़ों हम लोगों को संरक्षित और प्रदर्शित की जाती है. उन्हें हम कहा जाता है म्यूजियम. आर्टिस्टिक एंड कल्चरल
important are kept, preserved, and showcased to people is called museum. They are good source of entertainment. Some museums are situated in our country. The Indian Museum in Kolkata, the National Museum in Delhi, and Salarjung Museum, Hyderabad are some of the most important museums in India. Next, do's and don'ts. Throw your waste only dustbin. Do not take photograph inside the museum without permission. आप बिना अनुमति के म्यूजियम अंदर आके तस्वीरों को फोटो ना खींचे बिना परमिशन विदाउट परमिशन. डो नॉट टच द आइटम्स ऑन डिस्प्ले. डिस्प्ले में आपको बिल्कुल टच नहीं करना. वॉक एंड क्यू एंड डू नॉट मेक नॉइस इनसाइड. एक कतार में चले और एक सह म्यूजियम के अंदर शोर ना करें. नेक्स्ट वी आर स्टडी wells and tanks. Wells and tanks are constructed to store water and provided to a locality. You know, कुएं और टैंक्स का निर्माण पानी को स्टोर करने और एक इलाके में उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है. The wells or tanks must be covered. You should cover your tanks and wells. ये बिल्कुल कवर करना है कुआं और टैंक. Do not throw garbage into the open well. Do not throw. आपको वेस्ट जो कचरा वगैरह क्या है वेल के अंदर मत डालो. A disinfectant must be used to clean the water in wells and tanks regularly. आपका कुआं और टैंक्स पानी को नियमित रूप से साफ करने के लिए एक कीटाणुनाशक का उपयोग किया जाना चाहिए. Patiently wait for your turn to collect water from the well. कुएं से आपको पानी इकट्ठा करने के लिए आप धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करें. थोड़ा क्षमा कीजिए, सहनशीलता से इंतजार करें. पेशेंटली मीन्स थोड़ा क्षमा से आपका टाइम आपका टर्न एंड कलेक्ट वाटर फ्रॉम दिस वेल. इंतज़ार करके पानी इकट्ठा करें. Dear students, your third video is already completed. Thank you.